After the completion of the first session successfully of this today national level seminar, we have to move ahead for the second session. The resource person which we got for the second session of this today national level seminar is Dr. Om Prakash Jadhav sir. I will shortly introduce him to all the participants. Dr. Om Prakash Jadhav sir is just a minute sir, mute करा sir. Hello sir. Sir, rewind करा please. Oh. After the completion of the first session successfully, we have to move ahead for the second session of this today national level seminar. The resource person which we got for the second session of this today national level seminar is Dr. Om Prakash Jadhav sir, MSc PhD in statistics, working at Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. He has 14 years of teaching experience. His research interests are operation research, regression analysis, big data analysis, etc. He is a research guide. Under his research guideship, 2 students have been awarded PhD, while 2 are still working. 28 publications have been published by him so far, and 2 books have been published by him. Apart from the academic and research domain, he keeps interest in other activities or extracurricular activities, such as he has been working as an expert and committee member on Maharashtra State Backward Commission. He has been also working as a PG NSS program officer, Dr. Bamu, Aurangabad. He has been also working as a BOS member in various university and colleges. Apart from this, he has been worked as a visiting professor. He has been worked as a visiting professor at Department of Management Science, visiting lecture at Department of Commerce, and visiting lecture at Government Engineering College, Aurangabad. With this short biographical introduction of the second session of this today national level seminar, Dr. Om Prakash Jadhav sir, may I request him to start his presentation. Dr. Om Prakash Jadhav sir, please. जाधव सर एकदा अनम्यूट करा तुम्हाला. Okay, sir. Go ahead. Okay. Good afternoon, all of you. Firstly, I would like to thank convener of this two-day national seminar, Professor Dr. Chandrasekhar Murumkar, Principal, TC College, Baramati. Co-convener of this seminar, Dr. Shivanand Jadhav, Principal of Sri Sant Gajanand Mahavidyalay, Kharda. Secretary of this conference, Dr. Omkar Kiste sir, and all
organizing committee member, for inviting me as a resource person. I also thanks for these two colleges, TC College Baramati and Gajanan Mahavidyalay Kharda, for organizing such type of events or conference like seminars. Okay. Now, friends, now this today first sessions we have seen Gore sir is discuss about what is the research methodology. And these sessions I will discuss in application of statistics in social sciences research with SPSS. You know what is the statistics? Each and everywhere we use statistics, but we have to collect the data. The next step is the how to analyze the data in social sciences as well as life sciences. Application of statistics are very huge application of statistics in everywhere, life sciences, social sciences, medical sciences, all, every field we have to use a lot of application of statistics. So this I have in this seminar I have conducted two sessions. Today is the first sessions, tomorrow is the another sessions. Okay, now friends, we go to our slide. Just 1 minute. Okay, 1 minute. So this today's sessions we will discuss okay, friends, this is my today's topic for this seminar, application of statistics in social sciences research with SPSS. Okay, now in today's sessions we will discuss the following points. The first is the introduction of statistics. You know, I think Gore sir is also discussed what is the statistics, what is the data, but my view is what is the role of statistics in the research process. So that's why my second point is the research process, where statistics is present. That purpose we in brief we will discuss here research process. Then second thing is the types of data in researches. We identify which types of data is there. We have which type of data. It is qualitative data or quantitative data. And then we will go application of statistics in social sciences and other sciences. You know, my topic is the application of statistics in social sciences. But I will discuss other area like agriculture statistics. What is the application of social sciences? In medical sciences, in pharma industry, in IT sector, various huge application of statistics, all applications are discussed. I will discuss in that particular point. But my friends, my target is how to analyze the data. Is that right? So how to analyze the data through SPSS. So now that particular point we discuss how to install, how to input the data, how to check my SPSS installer properly. I will discuss in that particular one. Then we will go to the SPSS window or menu bar. In SPSS there are two types of views. In main window is there. Another sub windows is data view and variables view. So that's why how to insert questionnaire data to SPSS window, like data view window and variable view window, and how to take coding of the data. And now next point is insert variables.
sort data, select cases, how to merge two files. One is another file, and it is right, how to merge two files and how to take the transpose of the data, like etc. We will discuss in that particular point. And last is the graphs and summary of the data, how to summarize the data. Is right? Okay, so these are my today's session. Now my second sessions, this tomorrow sessions, I will discuss remaining part. Remaining part means which? Now in these sessions, in these sessions, we will discuss how to collect the data, how to insert the data, and the next sessions we will discuss here how to analyze the data through SPSS. Like, you know, statistics is that there are two branches of the statistics. First is the descriptive statistics, another is the inference of statistics. How to analyze, how to measure of central tendency, how to find the measure of central tendency, how to find the measure of dispersions, and how to analyze that various inferences test like t-test, chi-square test, ANOVA. It's right. How to predict the future values, like predictive analysis, regression analysis. What is the correlations? All I will discuss in my next lecture. Friends, firstly, my first point is the introduction of statistics. You know, what is the statistics? Statistics means we have some data in rough ideas. What data, graphical representations. Okay, this is the statistic, and some representations is there, some numerical value is qualitative value or quantitative value. Means we have to collect some survey, we collect some data, analyze means chart and tabulations, or find out some estimated values like average. And these all concept, it is known as the data analysis. Why we analyze the data? It is very important. Why we analyze the data? The one purpose is we take the proper decision. I will talk in Hindi also, no problem. Okay, friends, अगर आपको पता है what is the statistics? Statistics में हम ये सोचते हैं कि data collection करने के बाद उसका we create some presentations like charts, histograms, Ogier, pie chart terms. ये सब क्यों करना चाहिए? We take the proper decision. What is your object? Every researcher, every businessman, every student, every farmer object is we get the maximize the profit in minimum time. How to get the maximize profit? And how to get the result properly. So that's why we take the decisions. आप सोचते हो कि weather forecasting करना है, तो we have data, it is necessary. और उसके बाद हम decision लेना चाहते हैं कि what is the next step. Is right. So statistics means it is the branch. Okay. What is the statistic? Statistics means in that particular definition, number of definitions is there. But one important definition is this: statistics is the branch of art or science, deals with study on collection of the data, tabulation of the data, representation of the data, analysis of the data, and last word are the very important, it is the interpretations. Isn't it? These are 5 words. The first word is what? It is the collection of the data. It is right. Second is the tabulation. What is the data? Gaurav sir has also, last lecture Gaurav sir is discussed. Data. Data is the, whereas it is information form or it is the data form. Data form information means both is similar, but data means it is the collection of the informations.
data. It is primary data as well as secondary. But any information, we have to collect the information. Primary data, we have to collect the first information. It is known as the primary. अगर आप first information collect करते हो, it is known as the primary data. What is the secondary data? This information already available in another places, magazines, in our offices. This is the secondary data. It is right. Primary data is also known as the raw data of the data. Raw data. Okay. We how to collect the data. The next question is this data is converted into tabular form. What is the tabular? Tabulations. Tabulation is a given data, arrangement of the given data, systematic manner, row wise as well as column wise. It is known as the tabulations. And then we draw the graphs. It is known as the representation of the data. The five word: data, collection of data, tabulations, representations, and then next step is the analysis of the data. In analysis purpose, hypothesis testing is there, descriptive statistics and inference statistics is there. So analysis, and then last is we analyze the data and we inferences is there. Means it is the conclusions or results we write in the inference of the statistics, interpretation of the data. It is right. But these are the basic definition of the various author. Each and everywhere our statistical definition is differences. Your approach is different. The definition is also differences. Okay, friends. In previous lectures, co-research is discussed research process. I will also discuss here what is the research process in a few minutes. My purpose is what? My purpose is what is the role of statistics in that particular research process? Is right? आपको पता है कि what is the research process? और research process में statistics का use कहाँ से होता है? In that particular research process, there are 7 steps. You know what is the first step? First step is the define research problem. Means identify our problems. अब जब गाइड के पास जाते हो, प्रोजेक्ट होगा या रिसर्च होगा या एमफिल्स होगा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? हम रिसर्च के गाइड के पास जाते हैं, फर्स्ट वी आइडेंटिफाई आवर प्रॉब्लम्स. इट इज राइट. देन व्हाट इज द सेकंड स्टेप? रिव्यू कंसेप्ट. Previous review concept, review and literatures. The second step is what? Review and किसने क्या क्या किया, हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर previous review. We take the review and literatures. Then second, identify our problem is completed. Review literature is also completed. Then we will go to formulate our hypothesis, object and hypothesis. How to set the hypothesis, how to set the objectives. This is the another part. But next is we set the objective and हम आपको बहुत कम टाइम में मैं बताता हूँ कि how to set the objective. Objective कैसा सेट करना, this is depend upon our research topic. But hypothesis is depend upon our objective. आपके पास 10 objectives है. मैं जब कुछ एनालिसिस करता हूं, I am analyze some data, but what happens sometimes is there what happening, number of objectives equal to number of hypotheses. It is wrong. How to set objective? Objective is depend upon our research topic, research area. But hypothesis, we set hypothesis, minimum hypothesis, covered maximum object. Suppose we have 6 or 7 objectives is there, then we set only 3 or 4, but covered maximum objectives. Okay, in our hypothesis, this is the another part is the research methodology part, but I will
go to my topic is the analysis purpose. Okay. The next is the design research. In that particular design of research, आप यहाँ पे क्या करते हो? तो how to set the sample size, design the question, hypothesis set हो गया, आपका objective हो गया, hypothesis. The next is the design the questionnaire, how to collect the data, means questionnaire designing. Which is right. So what is the sample? What is the my population? How to collect the sample? What is the sample size? This is the design. Which is the which statistical tools we have to use in my research. This all is in step number 4. The next is then it is the field work. Field work means it is the collection of the data. It is right. Secondary data as well as primary data. If we are interested in collecting the primary data, we design the questionnaire. How to design the question? This is another part. But we have to collect the data through questionnaire or Google Forms. This is the another. The next is the analysis of the data. Means what comparative study or qualitative data or quantitative data, which type of data, what is your hypothesis? Statistical tests depend upon our hypothesis. Okay, then we will use analysis. Number of statistical tools is there, and the last is the interpretation. Okay, this is the 7 steps in the research process. The 7 steps where we use statistics. What is the role of statistics in this research process? What is the position of statistics? Now see, there are 7 steps. The 3rd step, statistics will be started. 3rd step से statistics आप use कर सकते हो. Hypothesis, it is no null hypothesis, alternative hypothesis. वहां से आपका statistics means आपके research के अंदर statistics is necessary. अगर you want proper research, means qualitative research, आपको अगर research proper करना है तो you definitely you use statistics. आप UGC हो, various institute और एजेंसीज डिसाइड करते हैं कि क्वालिटी रिसर्च होना, साइंटिफिक रिसर्च. अगर आपको साइंटिफिक रिसर्च करना है तो देन डेफिनेटली वी विल गो टू द स्टैटिस्टिक्स. उसके सिवा आप साइंटिफिक रिसर्च कर नहीं सकते. इट्स राइट. तो व्हाट द एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स? इट इज राइट, वी कलेक्ट द डेटा. Or now today's data is huge data. You know, I will discuss what is the big data, what is the data science, what is the machine learning. Also, it is right. Huge data is there. We use statistical tools. Sorry. Huge data is there. We apply statistical tools, and then we get the information. It's data mining. आप इस तरह से डायमंड हो या गोल्ड कहां से मिलता है? खजीना से मिलता है. नंबर ऑफ मूवमेंट्स, नंबर ऑफ एक्शन इज देयर. ह्यूज डेटा, बिग डेटा, लार्ज डेटा, उसमें से आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन माइन करना है. इट इज राइट. वी गेट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन. दैट पर्पस वी यूज स्टैटिस्टिक्स. इट इज राइट. सो फ्रेंड्स, in my this session I will discuss in brief in statistics, then I will go to the SPSS, then I will go to I will conduct some case study for social sciences as well as other sciences. Okay, types of variables or types of data. Only in main branches there are 2 types of data. First is the string data, another is the numeric. What is the string data?
देखो यार, जब एनालिसिस आप कर रहे हो तो वी आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेटा इज देयर. तो मैंने नंबर ऑफ डेटा इज देयर, बट बेसिकली स्ट्रिंग डेटा और स्ट्रिंग मींस व्हाट? नेम ऑफ द पर्सन, राजू, Sudhir, Meera, Sita. These are the name of the person. This is a string. Male, females. Numerical value is not present. It is known as the string data. What is the numerical data? You know, height of the person, it is measurable form. Weight of the person, 1, 2, 3. It's right. These are the numerical form of the data. तो फर्स्ट आपको पता चलना है विच डेटा डीलिंग विथ यू, आप किस तरह से डेटा डील कर रहे हो. इट इज राइट. देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ डेटा. इट इज द मेन ब्रांच, स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिकल. देन और नेक्स्ट इज द नॉमिनल डेटा. नॉमिनल डेटा, इट इज नोन एज आल्सो कैटेगरिकल फॉर्म ऑफ द डेटा, लाइक आईज ऑफ द कलर. उसमें न्यूमेर आते हैं कोई नहीं. इट इज कैटेगरिकल. जेंडर, what is the gender, male and female, it is the nominal form of the data. देखो अगर आपको ये डेटा आइडेंटिफाई होता है, it is very easy to मेरे को which statistical tools we will apply in my data, because we identify data. It is my data is follow normally distributed or not normally distributed. Some statistical tools is depend upon parametric and non-parametric test. It is right. That's why we identify the nominal data, ordinal data. Ordinal data means it is rank. The rank means 1, 2, 3 is not. But education, हम education में कैसे लिख सकते हैं? Illiterate first, second option क्या हो सकता है? It is primary education, secondary education, higher secondary, UG and PG. This is the order form of the data, means ranking numbers. It is right. It is the ordinal data. It is right. Now, interval data. Interval data means age, weight. Age. It is the measurable form of the data. It is known as the interval data. See, the first two, nominal and ordinal, it is the qualitative form of the data. Interval data and ratio data, it is the quantity. Quantity means it is a measurable form. Age, weight, income, ये जो कुछ भी है, these are the measurable form. It is right. It is the measurable interval, like 0 to 5, 5 to 10, interval of scale form of the data. Okay. Ratio data means it is also a measure of the physical dimensions such as weight. है ना? ये जो कुछ भी है, these two are the ratio and interval form of the data. ये these are the 4 types of the data. Ratio जैसा 50 में से we get 10 marks, 100 में से we get 65 marks. This is the ratio form of the data. Okay, this is the summary of type of variables. I was discussing अभी previous slide में मैंने बता दिया था, वही slide है. These are another forms. So friends, basically qualitative or quantitative. Qualitative is nominal form and ordering form of the data. Quality, it is categorical form of the data. Like height of the person, it is measurable. Means it is a quantitative. Like brand of PC, which brand? Do not measure. The brand is quantity. Sorry, quality. The quality is good or bad. Martial stuff, married or unmarried. Hair color, black, white. It is right. This is a categorical form. And now next is the measurement of the data. Is quantitative data. In quantitative data, basically 2 types: discrete and continuous. Discrete means if class interval is there, or measurable form of the data. It is continuous form. Discrete means only we have frequency form of the data. How many TV sets? It's on how many TV sets? We get the frequencies. It is the discrete, another is the
continuous. Okay. What is the source of data? How to generate the source of data? See, there are many methods used to collect or obtain data for statistical analysis. Three of the most popular methods. It is right. First, it is direct observations. For example, doctor क्या करते हैं? Direct observe. And then take the decisions. This is a direct observation. Experiment. There's a physics, chemistry. We conduct some agriculture, we conduct some experiment. Then we get the data. And last is the survey form of the data. We design the questionnaire in social sciences. 95% data generated in survey forms. Okay, right? These are the primary data. Gore service discuss in that particular primary data, secondary data, methods of the collection of the data, experiment, survey, census, sampling. Samples, sampling. In that particular sampling, there are two types of sampling: probabilistic sampling and non-probabilistic sampling. It is right. Simple random sampling with replacement, without replacement. It's right. Stratified cluster sampling. These are the stratified. These are the probabilistic. Non-probabilistic sampling is convenient judgment sampling. These are the non-probabilistic. Okay. This is the application of statistics only. But यहाँ पे only one side I am presenting here because ऐसा कौन सा ही एरिया नहीं है जहां पे एप्लीकेशन स्टैटिस्टिक्स यूज नहीं होता है. तो हम कितना स्लाइड बताए तो भी इट इज नॉट पॉसिबल. सो दैट्स व्हाई आई एम शोइंग हियर ओनली वन स्लाइड. इट्स राइट. अगर आप सोचते हो एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ह्यूमन एक्टिविटी जहां पे भी होती है वहां पे स्टैटिस्टिक्स यूज होता है. बायोलॉजिकल साइंसेस, कॉमर्स, इंडस्ट्री में तो अभी 6 सिग्मा है. इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स इज देयर. हाउ टू मेंटेन द क्वालिटी. इट इज राइट. अगर इंडस्ट्रियल्स में अभी एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, प्लानिंग में तो ह्यूज एप्लीकेशंस. बिजनेस वी टेक द प्रॉपर डिसीजन. अगर मेरा मार्केटिंग का सब्जेक्ट है, मैं कितना मार्केटिंग के ऊपर मैं खर्च करना चाहिए कि मेरी सेल इंक्रीज होती. सो दैट पर्पज वी यूज स्टैटिस्टिक्स ईच एंड एवरीवेयर. लाइफ साइंसेस, सोशल साइंसेस, मेडिकल साइंसेस. आप ऐसा कौन सा ही सब्जेक्ट नहीं जहां पे स्टैटिस्टिक्स. बट वी यूज प्रॉपरली. मालूम है सबको कि स्टैटिस्टिक्स यूज होता है. लाइक ओनली फाइंड आउट द मेन, वी फाइंड आउट द ग्राफ्स. यस, इट इज द स्टैटिस्टिक्स. नो, वी यूज प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टूल्स. आपको अगर साइंटिफिक रिसर्च करना है तो देन डेफिनेटली वी गो. ऐसा स्टैटिस्टिक्स का रोल किस तरह से होता है मैं मैक्सिमम लेक्चर में बताता हूं. जैसा कि फूड होता है, वेयर फूड, खाना. आपके सामने बहुत सारा खाना रखा हुआ है. अगर वो खाने में नमक नहीं है तो व्हाट हैपन? नो इंटरेस्टिंग, नो टेस्टिंग. फूड टेस्ट नहीं हो सकता है, टेस्टी नहीं हो सकता है. तो उसी तरह अगर आप खाने में नमक नहीं है तो हम बोलते हैं यार क्वालिटी इज वेरी पुअर क्वालिटी, टेस्ट नहीं लगता है. बाद में हम बोलते हैं क्वालिटी इज वेरी बैड. अगर उस नमक में अगर आपका खाना थोड़ा सिंपल भी है और उसमें नमक है तो व्हाट हैपन? अरे एक्सेलेंट, क्वालिटी इज गुड. सिमिलर इन रिसर्च, आपका नंबर ऑफ रिसर्च है, नंबर ऑफ फील्ड है, ह्यूज नंबर ऑफ फील्ड इज देयर.
अगर उसमें स्टैटिस्टिक्स नहीं है, आपका बहुत साइंटिफिक रिसर्च है, उसमें आपको स्टैटिस्टिकल टूल्स नहीं है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है, आप क्वालिटी रिसर्च साइंटिफिकली अगर प्रूव नहीं कर सकते, और साइंटिफिक प्रूव करने के वास्ते वी विल यूज स्टैटिस्टिक्स। उसके वास्ते जिस तरह से नमक है, नमक हर खाने में होता है, उसी तरह स्टैटिस्टिक्स एवरीवेयर, एवरी रिसर्च वी will use statistical tools. Definitely, then we use statistical, definitely your research is quality research is there. अगर वहां पे statistics नहीं है तो number of problems, आपके सामने बहुत सारा खाना है फिर भी मजा नहीं आती, उसी तरह से आपके पास बहुत सारे आइडियाज है, आपके पास डेटा बहुत सारा है, लेकिन आप उसमें स्टैटिस्टिक यूज नहीं करते तो इट इज नॉट साइंटिफिकली प्रूव। उसके वास्ते अगर आपको कौन सा ही रिसर्च जर्नल ले लो, उसमें स्टैटिस्टिकली साइंटिफिकली प्रूव होना चाहिए, और साइंटिफिकली प्रूव करने के वास्ते वी यूज स्टैटिस्टिक्स। languages also we have to use statistics. Writing style of the author is different. Crime purpose we use statistics. एग्री में तो हम बताते हैं कि जो एग्री में का तो एग्जांपल मैं बताता हूं, मैं खुद प्रैक्टिकल कर चुका हूं उसके ऊपर, कि जो महाराष्ट्र में मराठवाड़ा है, जो औरंगाबाद रीजन है जैसे मैं बिलोंग होता हूं, विच तो वहां पे कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कौन सा लेना चाहिए, उसके वास्ते भी देन वी यूज स्टैटिस्टिक्स। जैसा सोयाबीन का हमने ले आता है, सोयाबीन बारिश मराठवाड़ा में बहुत कम होती है, लेकिन जो फार्मिंग कम्युनिटी है, जो मराठी में उसे बोलते हैं पारंपरिक खेती, राइट, देन बारिश तो कम है, तो विच सोयाबीन यहाँ पे अच्छा कौन सा है, नंबर ऑफ वैरायटीज वी हैव टू टेस्टिंग, देन वी डिसाइड which variety is best for this area. So that's why we will statistics. अगर और एक केस स्टडी के मैं एप्लीकेशंस बताना चाहता हूँ, अगर फार्मिंग कम्युनिटी के बारे में तो हो चुका है, जब when we are interested launching the one project, अगर आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है, then we conduct the कस्टमर की रिक्वायरमेंट से प्रोडक्ट अगर लॉन्च होता है तो डेफिनेटली वी गेट द मैक्सिमाइज प्रॉफिट। आवर पर्पस इज बिजनेसमैन का पर्पस, व्हाट इज द बिजनेसमैन पर्पस, वन पर्पस इज देयर, वी गेटिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट इन मिनिमम टाइम। इट्स राइट। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए। इट्स राइट, दीज आर द ऑब्जेक्टिव, और वो ऑब्जेक्टिव टॉस करने के वास्ते satisfy our objectives, that's why we use statistical tools. जिस तरह से मैंने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था, प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना है मार्केट में, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर इज देयर, तो किस तरह से, देन वी कंडक्ट द सर्वे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करो, डेटा कलेक्ट करो, उसके ऊपर वर्क करो, और देन वी लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। It's right. That time also use some statistical, huge number of applications is there. So friends, you know, statistical definitions is there. Only basically there are two types of statistics. एक होता है descriptive statistics, another is the inference of statistics. In descriptive statistics के अंदर okay, what is the descriptive statistics? We collecting the data, presenting the data, characterizing the data, right? These are the descriptive statistics. Descriptive जैसा mean, we have find out the mean, standard deviations, these are the descriptive. And what is the inference of statistics? Inference of, then we set the hypothesis. We said the hypothesis may involves estimations.
hypothesis testing. Hypothesis testing means null hypothesis. We set the hypothesis. It is null hypothesis. Another is the alternative hypothesis is there. That's why we use some means like t-test, chi-square test, number of tests, ANOVA, regression analysis. That's why these are the number of statistical softwares available in market. It is right, SAS, SPSS, Minitab, R, also Python, Statistica, Systat, Excel. These are the software. But today we have discussed here SPSS. Okay. Okay. Now let's start here SPSS. Firstly, I will discuss in brief what is the SPSS. Then I will go to the hands-on training, how to insert the data, how to create the data files. We have data, otherwise I will provide data. Then we analyze the data. So firstly, basically one point to point we will discuss here. So firstly is the SPSS. It is the statistical package for social sciences. It is the original name is the statistical package for social sciences. But now IBM company ने इसको ले लिया है, तो the name is changed statistical product and service solutions. It is right, statistical product and service solutions. It is very SPSS. अगर आपका सर्वे टाइप ऑफ डेटा है, मैं आपको 100% बताता हूं, दूसरा कुछ भी मैं देखो, then you will go to the SPSS. It is very easy and very simple SPSS. Okay, one of the most popular statistical package which can perform highly complex data manipulations and analysis with single instructions. It is very easy. Simple. It is very popular software. It's right. Now currently in market, like R, Python is there. But this is the statistical or big data, huge data. That purpose, if we have large data, then you definitely will use Python and R software is there. Hadoop is also there. But statistics is very simple and it is easy to understand. So SPSS for Windows is computer package that will perform a wide variety of statistical procedures. See, it is very important in next point. Using SPSS, we can manipulate data. We creating data in SPSS. जिस तरह से Excel होता है, उसी तरह से make graph, perform statistical techniques. Various statistical technique. We use mean, every statistical technique we will use in SPSS window. It is very easy software. Okay. Now managing of data and files. SPSS can bring different types of data files like Excel files. You can open not only SPSS file, आप SPSS की खुद की फाइल भी क्रिएट कर सकते हो. Otherwise, Excel है, other document है, उसकी फाइल हम एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे ले सकते हैं. Okay, you can create a new data set in SPSS. नहीं, मैं Excel में नहीं करूँगा, मैं खुद SPSS में, then you will go. No problem. You can create a new data set with SPSS. You can also edit, delete, and view. राइट, इसमें डिलीट भी किस तरह, हाउ टू डिलीट, सिंपल वे, जैसा एक्सेल में हम डिलीट करते हैं उसी तरह से एडिटिंग द डेटा फाइल क्रिएट कर सकते हैं. इट इज वेरी सिंपल वे. जिस तरह इसको एक्सेल आता है, इट इज वेरी इजी. ओके, लाइक दिस सेम स्लाइड इज देयर, टाइप्स ऑफ डेटा एंड दिस. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट work about on SPSS. Firstly in SPSS, आप मैं SPSS से वर्क करता हूँ. अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो, otherwise we have to see.
इट इज राइट। अभी आपने SPSS में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद then we check my SPSS window is installed or not, and how to then there are two options. One is the start, then go to program, SPSS is present or not. Otherwise, very simple way, only we have to search here SPSS file. Okay, ये देखो, this is the 16. Now it is very important. In market available currently 25 version available, but 16 मेरे पास है, उसमें और उसमें बहुत सारा कुछ चेंजेस है, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट इज इनफ इन दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। ओके, थोड़ा देर लगता है यहाँ पे। ओके, अभी हम यहाँ पे करना, व्हाट डू वी हियर, व्हाट इज द SPSS, insert the data, what is the windows. Okay, this is the SPSS window, friend. It is similar as Excel file. आपको पता है कि इसी तरह से Excel की फाइल होती है, it is right. But what is the different? It is right. These are the menu bar are different. It is right, no problem. But one difference is there in that particular window. Sub windows is there. First is the data view window, another is the variable view. Now what is the data view and variable I will discuss here, but we will go here. The first is that this is the file. आप जिस तरह से Excel में फाइल होता है उस तरह न्यू, अगर आपको डेटा क्रिएट करना है, न्यू डेटा क्रिएट, then you will go to this window. अगर आपके पास existing फाइल है then open the existing file. Okay, डेटाबेस ओपन करते आप रीड डेटा करते हैं दिस तरह। अगर आपको सेव करना है, यहाँ पे कुछ डेटा नहीं, उसके बाद अगर we are interested in saving the data, then we will go to the save all data, then automatically my file is saved. Okay, then go to the edit. अगर आपका insert variables, what is the insert variable, what is the insert cases? In my questions there are suppose 20 variables is there. We are interested, I will insert another variables. So how to insert? Then we click here, then automatically insert another variables. Similar in insert cases. Okay, this is the view. It is not grid is another, it is not important, and we have in few time, so I will not go to details. But data, it is data is the in data I will discuss your sort cases. जिससे sort होता है increasing or decreasing form, then transpose, merge file. अगर आपके पास 2 files है उसमें से how to merge the file. एक add cases आपके पास, what is the add cases? Suppose आपको अपने पास suppose there are 100 questions का एक set है, another is the 25 question का एक set है, तो दोनों को we are interested in merging the data. How to merge the data? So add the cases. अगर आपको variables, लेकिन add करते वक्त it is very important, add cases के अंदर जो 100 questions है आपके पास, उसकी variables name are same. Now another data set variables name are same. उसी में ही आपको add cases हो. Otherwise we will go to the add variable. First जो फाइल है उसमें से आपको 10 वेरिएबल्स है, लेकिन सेकंड फाइल है उसमें से 10 सिमिलर है, अनदर इज डिफरेंट, देन ऐड वेरिएबल्स. इट इज राइट. देन गो टू द ट्रांसफॉर्म rank cases, creating. Now see here another way is the select cases is very important. मेरे पास मेल एंड फीमेल का डेटा है, we are interested only we will analyze the data for only male persons, then we will go to the only select cases. आपको only male का ही डेटा का एनालिसिस प्रॉपर्ली मिल सकता है. फीमेल राइट, कास्ट इज देयर, आपको किस कास्ट का एनालिसिस करना है वही पे भी मिल सकता है. ओके, now next is it is very important, it is the statistical purpose analysis.
Analysis is the descriptive statistics. See, report is another, is the report summary, rows, column wise summary is there. Descriptive statistics, we find out the mean, mode, measure of central tendency, dispersions. We are to create the frequencies, then automatically we create their frequency. Descriptive statistics. Cross tabulations, ratio, we PP, QQ plot. PP means, you know, we check the normality. That purpose these two plots are used. Okay, then we graphs. Chart builder is there. It is right. Window and helps. It is right. Then we will go to the. These are the basic. No, we will go to the variable view. See here, variable. So variable view है. What is the variable view and what is the data view? We have questionnaire. Suppose one question, two question, three question. See, wait, I will show. Easy to understand purpose. I will show one questionnaire, sample question. Where? Okay, no problem. Okay, this is my sample question. Okay, it is what purpose I am showing. It is easy to understand better. That purpose I am showing this file. आपको इजी समझने के वास्ते, और यही क्वेश्चन लेके मैंने अपने SPSS में how to create the data, how to insert the data, this questionnaire data to our SPSS file. Okay, so this is my first variable. First question is my first variable. Second question is my second variable. Third question is my third variable. How many variables is there? There are 10 questions. Means in that particular questions, my 10 variables is there. It is very simple. Okay. तो जो variables होते हैं, it is right. ये जो मेरे variables है, questionnaire variables convert to SPSS. Otherwise, questionnaire variables insert in my SPSS window. That purpose we will variable. We use variable view. उसके वास्ते हम variable use करते हैं. Otherwise, जो data रहता है variable का, then we will. अगर data आपको insert करना है, then go to the data. It is clear. Variable अगर आपको insert करना है, तो then we will go variable view. अगर आपको data insert करना है, then we will go data view. It is very simple. It is right. Then firstly we will go to the data view. Okay, what is the data view? We have number of these are the my first is the my first variable name. It is right. This is my types, width, decimal, label, value, missing, column, alignment, and measure. The very important is what first, second, third is not label is very important, and measurement. Okay, right. So my first is my first variable. What is the first variable? Okay, my first question is my first variable. My second question is my second variable. My third question is my third. And what is my first question? I will show this question here. It is right. Name of the employee. Name of the employee. Second is gender of the employee. Okay. 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 So I will firstly variable view. Variable view में हम क्या करते हैं? Firstly, अभी hands on training देना चाहता हूं मैं. तो फर्स्ट इज द सिंपल है. आप ये कब यूज करते हैं? आपने डेटा कलेक्ट कर चुके हैं और आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चनियर्स है. देन हाउ टू इंसर्ट द क्वेश्चनियर. इट इज राइट. तो फर्स्टली मैंने फर्स्ट क्वेश्चनियर ले लिया. उसमें से फर्स्ट वेरिएबल इज माय इज द व्हाट इज द इट इज द
name of the person. It is name of the employee. Employee related data मेरा questionnaire का. So what is the first is the name of the employee. Yeah, otherwise जो कुछ भी name है, what is the name? Name is the ID of the person. Name is the ID of the person. Okay, so first is I will write here only ID. ID. जो नाम होता है वो ID. Otherwise we write name. Otherwise we write name. Otherwise only we have to write question 1, question 2, question 3, question 4, question 5. There are 10 questions. First is my question ID. ID is the name of the. हमने क्या पूछा है? What is your employee's name पूछा है. Employee name, this is the ID of the person. Okay. अगर मैं ये क्लिक करने के बाद देखो SPSS में जो वेरिएबल व्यू में ऑटोमेटिकली रिमेनिंग डेटा है क्रिएट होता है. Only we have modified this data. It is right. अभी मैंने जो कुछ भी वेरिएबल है उसको मैं इंसर्ट करके लेता हूं. What is the my second? Second is the gender. Right? Gender. It is right. Automatically remaining columns is created. Third is the age. Sure, this is the see. मैंने क्या किया है? कुछ भी ज्यादा नहीं. ये जो कुछ भी क्वेश्चंस है उसकी इनपुट कर रहा हूं. Okay. The name of the employee, gender. One is very important. जो name है, this is the shortcut. Only यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? Only label. Label is detail label is there. Only short form. Like ID, gender. अगर और ये लिखते वक्त firstly we use alphabet. Do not use one. अगर one लिखते हो, अगर मैं Q लिखता हूँ, ये कभी नहीं. It is wrong command. So first start with alphabets. Start with alpha. आप इसके अंदर स्पेस नहीं ले सकते हो. जैसा next is the age. Age. और मैंने दे दिया स्पेस. स्पेस भी दिया. एरर्स. अगर आपको देना ही है अंडरस्कोर करके हम सॉरी अंडरस्कोर एज ऑफ इस तरह से कुछ भी चलेगा. इट इज राइट. बट अब डायरेक्टली स्पेस यहाँ पे अलाउड नहीं होता है. इट इज राइट. नाउ थर्ड इज माय हाइट. नेक्स्ट इज द वेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैकल्टी. फैकल्टी आप कौन से फैकल्टी से बिलोंग होते हो इसके वास्ते फैकल्टी. सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. नाउ नेक्स्ट इज आपका एजुकेशन क्या है. एजुकेशन. व्हाट इज योर एजुकेशन. एम्प्लॉयज एजुकेशन. थर्ड है करंट एंड करंट सैलरी. करंट थोड़ा करंट सैलरी. सी मीन्स करंट. यहाँ पे जो है बिगिनिंग और लास्ट क्वेश्चन इज करंट सैलरी बिगिनिंग सैलरी. लास्ट क्वेश्चन इज आर यू सेटिस्फाई. ऐसा क्वेश्चन पूछा है. और लिख सकते हो इट इज राइट. सी अगर हम इस तरह से लेते हो सी माई क्वेश्चन हियर. दिस इज माई क्वेश्चन हियर.
name of the employee, gender of the employee, male, female, age, height, weight, faculty of the employee, education of the employee, current salary, beginning salary. Are you satisfied with your job? ऐसा पूछा है. There are 10 questions, and now here we inserting the variable in my SPS. It is clear? Okay. The next is see here, this is the very shortcut form. We want details, then we write here. आप कितना ही लिख सकते हो, जिस तरह से है, नो प्रॉब्लम. आपके पास क्वेश्चन ही रहेगा. मैं तो ये सजेस्ट करूंगा डायरेक्ट कट पेस्ट करो यहाँ पे, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे डायरेक्ट कट पेस्ट करके आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो यहाँ पे डेटा, नो प्रॉब्लम. पेस्ट नेम ऑफ द एम्प्लॉय, नेम ऑफ द जेंडर, मैंने इसी तरह से पूरा आप यहाँ पे भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम. सो नेम ऑफ द एम्प्लॉय, इट इज राइट. So now next is the types of the data. Okay, so we click here. There are two, numeric comma dot. It is only we have to see numeric and string. या करेंसी फिरेंसी अपने डेटा में नहीं है, उसके वास्ते मैं ज्यादा डिटेल में नहीं. अगर करेंसी फिरेंसी, डेट ऑफ बर्थ है, डेट्स है, डॉलर में है, साइंटिफिक नोटेशंस है, अनदर साइंटिफिक नोटेशंस है, देन वी विल यूज. बट न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग फॉर्म ऑफ द डेटा मैंने बताया है कि व्हाट इज द न्यूमेरिक एंड व्हाट इज द स्ट्रिंग. ओके, तो यहाँ पे मैंने आईडी इज द नेम ऑफ द पर्सन. अगर नेम लेता हूं मैं राजू, श्याम, सीता, माधवी, these are the string form of the data. आपको string करना चाहिए. अगर मैं ओनली आईडी है तो फर्स्ट सैंपल है, सेकंड सैंपल, थर्ड सैंपल, फोर्थ सैंपल, न्यूमेरिक, देन वी यूज न्यूमेरिक. इट इज क्लियर? देन आई विल, आपके ऊपर डिपेंड आपको क्या होना है. ये नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पे 1 2 3 ले लिया है, तो आई विल क्लिक न्यूमेरिक. ओके, इट इज राइट. नाउ नेक्स्ट इज here, विड्थ है जो ऑटोमेटिकली विड्थ इसकी जो होती है 8 लेता है. आपको कम ज्यादा करना है तो आप कर सकते हो यहाँ पे, नो प्रॉब्लम. विड्थ मीन्स ये देखो, यहाँ पे जो आप डेटा व्यू में जाओगे तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है, यहाँ पे ओनली विड्थ जो दिखाती है वो 8 पे दिखाती है. जैसा जिस तरह से और मैं वेरिएबल्स इंसर्ट करना चाहते हो यहाँ पे. ओके, इंसर्ट वेरिएबल मैं करता हूं. देखो कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दिस इज राइट. 8 है तो उसके वास्ते ऑटोमेटिकली, अगर आपको ज्यादा है देन वी टेक दिस. आपको इंसर्ट किस तरह से करना है, इस तरह से. क्लियर? ओके, सो आपको कम होना है या ज्यादा हो, इट इज डिपेंड अपॉन योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेरिएबल्स. नेम के वास्ते मेरे डिसिमल है. अगर डिसिमल है, जैसे हाइट है, हाइट किस तरह से होते हैं, 5.4. 5.4 मींस decimal. Name of the person, it is not necessary decimal, so it is converted to 0, no problem. It is it is converted to 0. अदरवाइज आपके रिसर्च में कुछ इफेक्ट नहीं है. जैसा फिर 1.00 2.00 क्रिएट होता है. अगर 0 इज देयर देन इट इज 1. ओके, name of the employee. Agar now here we will go, if see in my questionnaire, option is there, no option, do not go. Option is there in question 1, option is there, no option. Question 2 there are 2 options. Question 3 no option. Question 4 no option. It is right. अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चनरी में, तो डू नॉट यूज वैल्यूज. मिसिंग, अगर मैं बताता हूं व्हाट इज द मिसिंग, हाउ टू आइडेंटिफाई द मिसिंग. मिसिंग यहाँ पे कुछ जरूरी नहीं है. कॉलम विथ सिमिलर है. अलाइनमेंट इतना इंपॉर्टेंट है आपको, ये वैल्यू सेंटर में होना या राइट में या लेफ्ट में, दैट्स पर्पस. नाउ सी हियर, which is very important. Okay, so my name is the 1 2 3 4. It is the
nominal name of the person, it is the nominal form of the data. मैंने क्या किया, न्यूमेरिक नॉमिनल है, नेम इज द नॉमिनल, इट इज राइट. जेंडर जो होता है, अगर हाँ सी जेंडर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चंस. ये जो है उसको कॉपी, देन आई विल गो हियर and paste, otherwise we write name of the here, no problem. Okay, no, gender of the employee, sorry. Right, second. Now see here, it is important. How many options? There are two options. One is the one option is here mean. Right? This is the coding of the data. Add is very important. See here. See my question here. This is the C. First is the first option male. Second is female. Okay. One is the male, add. Second is okay. Now this is the add. Okay. यहाँ पे decimal की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी जरूरत नहीं है. 1 2 तो option it is right. Then we use this. Now here it is also one. It is also nominal because name male and female. It is the nominal. Now age of the employee. Now right here, age of the employee. Age of the employee. Now see here, third question option is there. Option is there, no options. Then do not use this. अगर आपके पास if age is 0 to 5 or 5 to 10, then we will insert the values of variables. Okay. अगर यहाँ पे आपको कहीं क्वेश्चन में मिसिंग है, what is the मिसिंग है, तो then we'll, कहीं लोगों ने यहाँ पे ब्लैंक दिया है. सपोज सैंपल नंबर 10 ने ब्लैंक लिया है, रिस्पोंडेंट ने कुछ भी नहीं लिखा, उसका एज नहीं लिखा, तो हाउ ओनली वी हैव टू decreate missing values. Click here and only we have to write here 999. ये नंबर है. अब ये नंबर हम इसके वास्ते कि सिमिलर, इसमें से कुछ भी नंबर नहीं, उसके वास्ते 99, उसके वास्ते हम क्या कर रहे हैं, इट इज राइट. ओके, ये 99 और देन वी गो टू द हियर. तो व्हाट इज द 199? ये 999 क्या है? दिस इज द मिसिंग. पता चलना चाहिए how many missing values is there. This is the missing. Okay, this is the missing. Now similarly the age is the, what is the age? Age is the scale form. Age, filling the blanks, scale, but numerical values is there. It is right. Similarly height of the person, it is right. It is the height of the person, weight of the person, like this all is discussed here. Okay, now then आप इसी तरह से पूरा ये कर सकते हो, no problems. Okay, ये इस तरह से height of the person like this, इसमें से. Now see here, question number, sorry, question number 7 or 6 and 7. One is the art. Okay, one is the art, second is science, third is commerce and fourth is the others. तो हमको कोडिंग करके लेना चाहिए. क्वेश्चन नंबर फैकल्टी है, या फिर फैकल्टी का आप लिख सकते हो. देन फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन इज फैकल्टी. इट इज द आर्ट फैकल्टी. आपको आपने पूछा है आपकी कौन सी फैकल्टी है? आर्ट्स.
add, then second science, third कॉमर्स है, कॉमर्स, लास्ट जो है अदर्स। नंबर ऑफ ऑप्शन इज, आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑप्शन कितने हैं उतने आपको इंसर्ट, हाउ मेनी नंबर ऑप्शन इज देयर, वी इंसर्ट देम, नो प्रॉब्लम। ओके, दिस इज नाउ सिमिलर इज this or like this. Okay, then I will go this is my variable this we are inserting, और इसी तरह से आपको पूरा ये करना चाहिए। and then I will go to the, इस तरह से insert होने के बाद then I will go to the data view. Data view will see here gender, age, height, weight, faculty, education, right? First question is the right ID. ID is the, we write here name, otherwise this is my first sample. अगर मेरा ID 1 है, मेरा first sample है, it is right, my second sample। के पास एक क्वेश्चनियर है, जो मैंने शो किया क्वेश्चनियर है, मैंने डेटा कलेक्ट कर चुका हूं और कोडिंग कर ले चुका हूं। देन हाउ टू इंसर्ट द डेटा इन SPSS, क्वेश्चनियर टू our SPSS। See, अगर आपके पास फर्स्ट सैंपल है, दिस इज माय फर्स्ट सैंपल, फर्स्ट सैंपल में व्हाट इज द माय सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में आपने पूछा है व्हाट इज योर जेंडर, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, उसने बताया है कि मेरा ऑप्शन 1 है, 1 इज द मेल। आपने यहां पे पूछा है व्हाट इज योर एज, एज पूछा है, एज उसने बताया है कि सपोज 38 एज है, राइट। हाइट बताया है उन्हें 5.4 में बताया है, वेट उन्हें 60 किलो बताया, लाइक फैकल्टी है, जहां पे भी क्वेश्चन को वेरिएबल को टिके वो इट इज इंसर्ट। फैकल्टी बोला उन्हें 2 ऑप्शन इज द साइंस। एजुकेशन में उन्हें बोला है, इस तरह से we have to insert the data. It is clear? This is the basic of SPSS. How to insert the data, how to create the data. अगर ये नहीं है, आप एक्सेल सीट भी यहाँ पे ले सकते हो, right? So अभी then I will go to my SPSS। ये डेटा मैंने प्रोवाइड कर चुका हूँ, ये आपको मिल जाएगा। ओके, then I will go, okay, this is my Kharja file, this is my sample। अगर जो जिस क्वेश्चन है उसका डेटा हमने इस तरह से क्रिएट कर चुका हूं, सिमिलर क्वेश्चंस। ओके, सी like this, ID, gender, age, height, weight, faculty, educations, like this. It is right. Now see here, this is the faculty, right? This is the all labels, job satisfactions, male, female, age के वास्ते अपने पास no options is there, यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं, यहाँ पे भी नहीं। now there are not options is there, now here options, see here, 1 art, commerce, science, another is the other is there, fourth okay, 1 minute। Others, add them, no problem, it is right। There are 4 options। now see here, education is, it is the which type of data is ordinal form of the data,
faculty. No, ordinary not, it is nominal also. Art, science, if primary education is there, it is okay. Then next, education of respondent. It is right, ordinary, it is also a ordinary, or it is also nominal. It is right. Job satisfaction, these are my coding. It is right. Then we have to create this such type of data. For example, I will, this is the providing files. Okay. So first, how many samples we have to collect? 100 samples. It is right. The next is the how to cleaning of the data. It is right. Then my PPT points. ओके अभी हमने क्या किया, व्हाट इज द स्पेसेस के अंदर है डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू मेनू बार insert questionnaire data. This is now how to insert variable, how to insert the variables in our data set, how to sort the data, select cases, merge data file, transform etc. I will discuss here. Okay, no problem. Okay. Okay, friends, this is creating data set. Then next is the, we are interested how many questions there are. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 variables is there in my questionnaire. There are 10 data set is there. It is right. So how many sample we have to select? There are 100. Okay, there are 100 sample आप select कर चुके हैं. Then its option is there. आपको ओके 1 मिनट देखो उतना ये है. तो फर्स्ट यहाँ पे अगर क्लिक कर दे ये ऐड 1 के अंदर, तो आपको पूरा डेटा क्लियर कौन सा क्या क्या है सब पता चलेगा. इट इज राइट. द नेक्स्ट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड, हाउ मेनी मेल्स इज देयर, हाउ मेनी साइंस रिस्पोंडेंट इज देयर. तो हाउ टू मीन्स अगर आपको फ्रीक्वेंसी क्रिएट करना है या अदरवाइज मेरे को और क्वेश्चंस वी हैव टू इंसर्ट अनदर वन क्वेश्चंस, मेरे को यहाँ पे और क्वेश्चन इंसर्ट करना है. देन सेलेक्ट दिस कॉलम, क्लिक राइट, इंसर्ट वेरिएबल, नो प्रॉब्लम, वेरी सिंपल. अगर इसको अगर नाउ दे वी हैव टू टाइटल देना है तो देन आई विल गो अगेन वेरिएबल व्यू, देन राइट हियर, no problem. Otherwise select this column, clear this column, automatically clear my variables. It is clear. It's a very simple way. Okay, now next point is then how to sort the data. We are interested only analyze data for male or females. यहाँ पे जाते हैं. It is right. Where data में आप जाइए, then select cases. Okay, what happen here? मेरे को only okay. Before that we will see here. Before that we go to the analysis. We go to the descriptive stat analysis के अंदर जाइए. Then we will descriptive statistics. It is the frequency. मेरे को ये सब की frequency होना, जैसा male, how many males है, ये कितने हैं, faculties कितने हैं, job satisfaction है. इसका मैंने क्या किया है कि मेरे को होना frequency. Within time we generate the frequency. Let's see here what is the statistics. My valid values is 100. Okay, my first question 100. This is the 100. This is the 100. Only 3 variables is there. So 100,
100%, no missing values is there. Now see what is the gender of the respondents, male and female. मेरा जो डेटा उसमें से 52 is the male, 48 is the female. It is percentage, valid percentage and cumulative percentage. Similar arts के है 28, commerce 48, science. These are the right. Okay, this is my frequency where हमने क्या किया है? We have generate the frequency tables. It is right. Okay, this is the output. In SPSS there are also two screens. One is this screen is the output screen. This screen is the output screen, and another screen is this screen is the which type of, this is the input screen. ये input देने के बाद then we get output. Okay, अगर ये देखो आपने अभी यहाँ पे कितने हैं मेरे पास आउटपुट के अंदर, how many males? 52 males and 48 are the female. अभी मेरे को only 52 मेल का ही एनालिसिस करना है, मेरे को 48 नहीं होना. Then how? Then you will go here, then analyze here data, then select cases. Select cases में क्या है? All cases is present. So यहाँ पे टिक all है, जितने 100 है 100 में से 100 है. If conditions we apply, if में अगर मेरे को किसका लेने का, we have to select the gender, this select gender. तो जेंडर में क्या करना है मेरे को? ओनली इक्वल टू 1 होना, ओनली वी वांट 1. ओके, कंटिन्यू देम, नो प्रॉब्लम. अगेन वी विल गो टू द सी. से फिल्टर, 1 column, 1 variables is created, and now 2 see here. Sorry. जो फीमेल है उसको क्रॉस कर चुका है, मीन्स ओनली ही सेलेक्टेड मेल्स डेटा. देन वी अगेन वी हैव टू चेक अपने मेल कितने हैं, आपको टोटल सैंपल कितने हैं 100, यहाँ पे 100 नहीं दिखाएगा वो, राइट. ओके, then this is my output. Only see here, compare it to studies. See here, how many valid variables? Gender 100. Male is 52, female is 48. Now this output only total valid is 52 because 48 is the female. 48 is the female. Like this. Okay, gender of the respondent. These are the 52 respondent gender. आपका जो एजुकेशन है पीजी वाले ओनली जेंडर के बारे में बता रहा है. ओनली 18 आर द, यहाँ पे कितने टोटल एजुकेशन रिस्पॉन्ड, फैकल्टी ऑफ द रिस्पॉन्स आर्ट में 28 है टोटल मेल एंड फीमेल. यहाँ पे 22 आर पीजी. नाउ ओनली मेल, उसमें से मेल कितने हैं? देन 18. इट इज राइट. इट इज वेरी इजी सॉफ्टवेयर. आपको जिस, मेरे को लगता है कि जो कुछ भी सैंपल्स है मेरे पास उसमें से मेरे एनालिसिस के ऊपर बहुत सारा इफेक्ट हो रहा है, तो आप उसमें से भी रिमूव कर सकते हैं. ओके, दिस इज माय फाइल्स. देन गो टू द डेटा अगेन. वी सेलेक्ट these cases, we select all cases, no problem. Remaining data is there. Okay, selected, not selected. It is clear. It is known as the select cases. उसी तरह से मेरे को लगता है कि मेरे को only we have to interest faculty. Then again go to the data view, select cases, if and if conditions. if, अब इसमें से मेरे को क्लिक कर दो, सेलेक्ट कर दो,
We will go to the, आपको लगता है only, okay, no problem, beginning salary लेंगे, beginning salary less than 30,000 की मेरे को फ्रीक्वेंसी लेना है, लेस देन 30,000, जिसकी बिगिनिंग सैलरी जो है वो लेस देन 30,000, उसमें भी कर दो, नो प्रॉब्लम, राइट. सी है. Again, we will go to the descriptive statistics, check the frequency. Yes, no problem. Okay. Less than. इसके कितने लोग हैं? इतने. उसमें से मैंने एक variables were not in enter another variables. We go to the this descriptive frequency, another beginning salary, and select current salary, select, no problem. Then यहाँ पे लेस देन 30, इतने, लेस देन 30, लेस देन से 30 की इतनी वैल्यू मिलेगी आपको, इतने लोग लेस देन 30 फ्रीक्वेंसी. करंट सैलरी लेस देन 30 कर, जिसकी इतनी थी, उसके बाद इसके इतने हो, इसी तरह से. ओके, दिस इज माय sort cases. This is select cases. How to sort cases? Okay, I will remove this. Go select cases, all cases. Okay, no problem. Right? So these are the hands-on training. It is very important to identify our variables. Cleaning of the data. अगर कहीं जगह मेरा मिस वैल्यू होती है, अभी मेरा ऑप्शन, सपोज देयर आर 3 ऑप्शंस, सपोज यहाँ पे गलती से मेरा 3 होता है, असाइनमेंट कॉज और चांस कॉज, यहाँ पे 3 और 4 होता है. इट इज राइट. हाउ मेनी ऑप्शंस? ओनली 2 ऑप्शंस, बट 3 and 4 आर द एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक. देन वी गो टू द एनालिसिस. आपको कितना ह्यूज डेटा कितना ही रहने दो, यहाँ पे चेक हो जाता है. ओके, ये मैं रिमूव कर लेता हूं. अननेसेसरी, इट इज वेरी हाई. ओके, आउटपुट फाइल here, not for, why not considering here? Okay, male is 51, female is third is by mistake 1. Another. Okay, this is the okay, these are the basic concept. Why not taking is for okay. Now next is the, we will go to the sort cases. मेरे लगता है कि we are interested only, मेरे को मेल फर्स्ट होना और increasing height होना, decreasing height होना. Then we go to the sort variable, sort cases. Okay, आपको किसका होना? आपको मेरे को एज वाइज सॉर्ट होना. ओके, नो प्रॉब्लम. वी सेलेक्ट एज. एज जो है, एज सीयर, अभी जो है मिनिमम असेंडिंग कर दिया मैं, मिनिमम टू दिस, लाइक दिस, which is right. Now this is a very simple way to analyzing the data. It is right. The type is very few minutes. I will discuss. So merge file. How to merge the file? Suppose this is the one
data file, and we are interested another one similar parallel file is there, and we are interested in merging two files, how to merge the files. Okay, then we will go to the data, here merge file. Okay, and this is the add cases and variable. Add cases means what? आपको डिटेल में बताता हूं. ये जो फाइल है इसकी जो वेरिएबल्स है एज इट इज वेरिएबल होना इट इज नेसेसरी, क्योंकि मैंने बोला है कि ये डेटा और तू डेटा एंट्री कर, तो उसके पास भी वही वेरिएबल होंगे, वही सिमिलर क्वेश्चंस इज देयर, देन उसी तरह का है तो देन वी विल ऐड. अगर उसके पास अनदर वेरिएबल्स है, मेरे इसमें नहीं है, तो देन ऐड वेरिएबल, देन वी विल ऐड वेरिएबल. अब ये जो ब्राउज़र विंडो है वो बोलती है कहाँ पे है, सेव तो होना चाहिए, कहाँ पे है, यहाँ पे कितने, देयर आर माय 100 सैंपल्स थे. ओके, इन दिस विंडो हाउ मेनी, इन दिस क्वेश्चनर हाउ मेनी सैंपल्स, 100 सैंपल्स. और मेरी दूसरी जो फाइल, दिस इज द अनदर फाइल. ओके, देन वी ब्राउज हियर. मेरा कहाँ पे, डेस्कटॉप पे मेरी फाइल कहाँ पे है, ये देखो खरडा वर्कशॉप बोल के है, उसमें से मैंने ले लिया है एक 2 नंबर का सैंपल मेरे को मर्ज करना है. ओके, ओके, कंटिन्यू, ओके, सिमिलर फाइल्स. ओके, दिस इज इनफ. मेरे फर्स्ट सैंपल कितने थे, 100, और रिमेनिंग जो है टोटल कितने ऐड हो गए मेरे पास, 110. मींस 10 जो कुछ भी सैंपल थे वो ऐड हो चुके हैं. इट इज राइट, इट इज नोन एज द मर्ज ऑफ द फाइल्स. इट इज क्लियर. Okay, now in these sessions, last point is, I think time is a few minutes. Insert data transfer in merge cases, transfer graphs and frequency also. Only we have to check the graph and then I will stop here. Okay, then we are interested in graphs. एक तो हम then we'll graphs we have to find the no problem graphs. Frequency है, then we chart, we will go to chart, no problem. This is the bar diagram, pie diagram, histograms, no problem. We have to select anyone. आपको frequency होना या percentage, we want percentage or frequency, then we will go okay, then we create the graphs. आपको इसके ऊपर value है, then click double. Then chart editor is there, then we will go to the elements, show the label. Okay, cancel them, then we get this no gender of the respondent. Okay, right. Now another, we are interested, another way of the graphs is there. Chart builder, we will go to the chart builder. We select which type. This is the favorite, bar, line, area, pie chart, scatter diagram, histograms, like this. And we are interested, suppose this histograms. Select this one, no problem. Then we are the height of the person. Height of the person. We crack this, right? And then we'll close the histogram, then we will go to histograms, percentage histogram. Okay, then we'll okay, click here, then graphs is there. I will check this, my data is normal histograms. We check the normality of the data. How to check the normality, my data is follow normal or not normal, abnormal. Then how to, then go to the this, show the distribution purpose. Okay, okay, this is the, my data is normally distributed or not, how to do, what is the distribution of the data. It is that, then we will do the distributions of the, it is skewness, positive skew or negative skewness, or my data is normally distribution. The error is there, these are the error, my data is some error there. That time we take the transpose of the data also, no problem. Okay, this is the
graphs is there. Okay, I think time is over. Okay, in these sessions, you have any questions you have in this? If you have any questions and any queries or any difficulties, you can write chat bar. Okay, then the next lecture, I will definitely solve all the. Okay. So thank you. Next section I will discuss here. Tomorrow, the next sessions, in that particular sessions, I will discuss similar data where to carry out, and then next session we will discuss how to analyze actual descriptive statistics and inference of statistics, how to analyze the data, and how to identify which statistical test we will use in that particular data. And then some case study of big data, machine learning, like logistic regression analysis, like big data analysis, how to handle the big data analysis. I will discuss it tomorrow. Thank you. Thank you very much. Jadhav sir, requesting to you please stop your presentation. Stop sharing. Okay, okay, okay. Sanjay sir, please continue. Please unmute yourself. Thank you very much, sir. Jadhav sir. You have been thoroughly presented the topic which you have been allotted to you. Application of statistics in social science, research with SPSS first, hand-on training. You have been thoroughly presented in your lecture through PowerPoint presentation in an ascending manner. Introduction of statistics, application of statistics in social science and other area, role of statistics in research process, recall process, types of variables, methods of collecting data, inferential statistics, and what is SPSS, and the management of data and files. The management of data and files is the part or is the segment which you have been thoroughly presented. Your lecture and PPT will certainly help the research scholars, research guide, and other professionals who are working in their respective research projects. We humbly appreciate your sincere efforts for your holistic presentation on research with chess first is hand-on training. Thank you very much, sir. Thank you once again. It's over to Rahul Shah, sir.